Hello बच्चों. The question reads as find the expressions for time and frequency in the oscillations of a liquid in a U-tube and secondly in the oscillations of a floating cylinder. So firstly we will see the key concept of this question. So the key concept for both the parts will be the time period in SHM. That is T is equals to 2 pi under root inertial factor divided by spring factor. Inertial factor is due to the movement or the mass here and spring factor is due to the restoring force. And for nu, that is frequency, this will be 1 upon t, which will be equals to 1 upon 2 pi under root spring factor divided by inertial factor. Now, for the first case, like for U-tube, so it is like this. So what we can assume that if there is a liquid inside it at this point, यहाँ से अगर हम consider कर रहे हैं, so from here to here, it will be H and कुछ चीज हमें कंसिडर करनी पड़ेंगी दैट इज लेट्स से rho, this is the density of liquid. A, area of cross section for the U-tube, and L for the total length of this tube. Now moving further, we can easily write that mass is equals to density into volume, and volume can be written as A, that is area of cross section, into L, that is the length, which will be rho A L. हम इसे बाद में यूज करेंगे, बट बिफोर दैट फॉर SHM टू बी नोटेड, अगर हम यहाँ पे इस लिक्विड को पुश करें इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेट से ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये y है, उतना ही लिक्विड राइज होगा राइट हैंड साइड, तो इट विल ऑल्सो बी y. जो डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक का, दैट विल बी 2y हियर. तो अब इस डिफरेंस को जो लेंथ में आया है ये एक्ट करेगा एज अ रीस्टोरिंग फोर्स. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट द रीस्टोरिंग एफ आर विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेट ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ लिक्विड इन बोथ द लेंथ्स ऑफ द U-tube. तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एफ आर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम इंटू जी, बिकॉज वी नो दैट वेट इज इक्वल्स टू एम जी. पर यहाँ के लिए जो हमारा m होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू L, रो इंटू ए इंटू एल. अब L की जगह हम क्योंकि डिफरेंस की बात कर रहे हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर हम वही डिफरेंस यूज करेंगे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट की वजह से आया था. रो इंटू ए इंटू 2y इंटू जी, जिसको हम रीराइट कर सकते हैं रो इंटू ए, 2 इंटू रो इंटू ए इंटू जी और बाहर y. तो दिस इज द इक्वेशन. This minus ky is the equation for SHM. So this is for the SHM equation. अगर हम इसको compare करें with the above equation, then we can write that k is equals to 2 into rho into a into g. अभी हम इसको use करने वाले हैं in spring factor. So now time period will be equals to 2 pi under root inertial factor due to mass, that will be rho into a into L divided by spring factor जो अभी हमने use calculate किया है. So this will give us, यहाँ पर हम लिख सकते हैं that t is equals to 2 pi under root L by 2g. and अगर हमने L को कंसिडर किया है 2h, then t will be equals to 2 pi under root 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा and we will get h upon g, and nu will be equals to 1 upon 2 pi, that is frequency will be equals to 1 upon 2 pi g upon h. So this part is the answer here for the first case. For the second case, that is for the floating cylinder, let's say this is the floating cylinder here, this is the liquid, let's say this is water. अगर ये water है और ये हमारा cylinder है, and let's say from here to here it is L. I have taken, let's say this is small L here,
And in downward direction, due to its weight, it will be mg, and in upward direction, there is a buoyant force. So before moving further, let's assume something. Rho will be the density of cylinder. A will be the area of cross section, and L will be the length. Now for mass, this will become rho into A into L, and if this is the length, so we can consider it. Let me write it capital L here. So we have got this part. Now in equilibrium, in equilibrium, this buoyant force will be equals to the weight which is in downward direction. Before moving further, let sigma be the density of water. Then we can write weight of water displaced by the cylinder. This will be equal to the FB, that is buoyant force, which will be equals to mg. Here m is the mass of the water. So we can write this will be equals to m will be equals to sigma into A into if just if we just push it in downward direction, then we will see that this will be like this. And if y is the displacement, then this whole part will become L plus y. So now we are going to use it here. This is L. L will be L plus y into G. This can be written like this. Sigma into A into y into G. After that, this F2, let's say this F2 with the buoyant force for the second case when it is pushed inside the water. So ये कितना हो जाएगा? This will become F2 is equals to, this buoyant force will be equals to sigma into A Lg plus sigma into A into y into G. अभी जो मैंने लिखा है इससे पहले, अब जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स होगा, दिस रिस्टोरिंग फोर्स विल बी इक्वल्स टू माइनस F2 minus mg net force. F2 downward direction, upward direction में, and mg downward direction में, so it will give us like this. So यहाँ पर हो जाएगा Fr, this will be equals to minus of sigma into A into L into G plus sigma into A into Y into G minus sigma into A into L into G. तो यहाँ से ये चीज कैंसिल हो जाएगी and we will get Fr is equals to minus of sigma into A into G into Y. अगेन हम इसको कंपेयर करेंगे माइनस के वाई से, जो कि इक्वेशन है SHM की. एंड आफ्टर दैट हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम पीरियड. दिस टाइम पीरियड विल बी इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट इनर्शियल फैक्टर जो है दैट इज सिग्मा इंटू ए इंटू एल डिवाइडेड बाय अभी जो हमारा के आया है दैट इज सिग्मा इंटू ए इंटू जी. सो दिस विल बी कैंसल्ड और हमें अपना आंसर मिल जाएगा T is equals to 2 pi under root L upon G and nu is equals to 1 upon 2 pi into G by L. So this is for the second case, and
Previously, we have seen for the fasting. Thank you, and I hope that you have understood it well, and best of luck.